हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत सारी बात करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी जैम का, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, राइट। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा पार्ट है जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हर एक साल में देखने को मिलेगा, राइट। तो चलिए लेट अस स्टार्ट ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। विल बी डिस्कसिंग सो मेनी क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस as well as new questions, the model questions, which will definitely give you a lot of idea and lot of anticipation what you can expect in the coming exam. So let us start our session on molecular biology, right? Okay. शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं उसमें रेप्लिकेशन पहले आ जाते हैं, राइट। देन ऑफ कोर्स ट्रांसक्रिप्शन आ जाते हैं, देन ट्रांसलेशन एंड फाइनली ऑपरेंट सिस्टम जीन रेगुलेशन के अंडर, ठीक है। दीज आर द मेन the topic, the main area from where you can expect majority of the questions when it comes to molecular biology, right? So let us start our session. देखो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, mutants of lac y which is designated as y minus, mutants of lac y gene of E. coli do not synthesize the lactose permease protein. सही है, मतलब ये जो लैक वाई है, लैक वाई कोड्स फॉर व्हाट? लैक वाई कोड्स फॉर लैक्टोज परमिएज। तो यहाँ पे लिखा है कि एक म्यूटेंट हुआ है लैक वाई, मतलब फंक्शनल लैक्टोज परमिएज आपको नहीं देखने को मिलेगा, राइट। ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर टू द बिहेवियर ऑफ लैक वाई माइनस म्यूटेंट्स अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के बारे में बताया जिसमें लैक वाई म्यूटेंट हो, मतलब जिसमें lactose permease non-functional. This is non-functional, right? This is non-functional. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बताया, फाइनली ये बता रहे हैं कि which combinations of the above statements is correct? Which combination of the above statements is correct? Let us see. No synthesis of beta galactosidase when Y cells are induced with lactose. No synthesis of beta galactosidase when Y cells are induced with lactose. अच्छा, पहले एक बार देख लो। आपको मान लीजिए ये है एक पेट्री प्लेट, यहाँ पे सेल्स ग्रो कर रहे हैं, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पे सेल्स ग्रो कर रहे हैं एंड ये जो मीडिया है, मीडिया पे आप लैक्टोज डाल दिए हो, मीडिया पे आप लैक्टोज डाल दिए हो, राइट। अच्छा, आपने लैक्टोज डाला मीडिया पे, अब लैक्टोज को अगर सेल के अंदर आना है तो कैसे आएगा? Lactose will come from media to cell by lactose permease by secondary active transport method, right? Lactose permease. अच्छा, तो लैक्टोज को मीडिया से सेल के अंदर आने के लिए परमेज एक्शन का जरूरत है। बट यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के बारे में बताया जहां पे बोल रहे हैं कि लैक्टोज परमेज इटसेल्फ इज नॉन फंक्शनल। दिस इज नॉन फंक्शनल। अच्छा, अब बताओ, जिसमें लैक्टोज परमेज नॉन फंक्शनल है वहां पे आप लैक्टोज डाल रहे हो, तो लैक्टोज का क्या होगा? लैक्टोज विल रिमेन इन द मीडिया ओनली, लैक्टोज विल नॉट कम इनसाइड द सेल। एंड अब सोचो, लैक्टोज अगर मीडिया पे रह गया, सेल के अंदर नहीं आया, तो लैक्टोज का कुछ असर देखेगा आपको? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का जरूरत होगा? नहीं। लैक्टोज अगर सेल का अंदर आया, देन सेल विल ट्राई टू मेटाबोलाइज इट। अगर लैक्टोज मीडिया में रह गया, how will cell utilize it? There is no question of utilization, right? तो जब लैक्टोज सेल के अंदर नहीं आ रहे, there is no question of lac operon synthesis. There is no question of synthesis of beta galactosidase, क्योंकि लैक्टोज सेल के अंदर आए नहीं। लैक ओपेरन का मतलब क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ लैक्टोज यूटिलाइजेशन, आपको लैक्टोज यूटिलाइज करना है, इसलिए आपको कुछ जीन का जरूरत है, जीन एक्सप्रेशन का जरूरत है जो कि कुछ फंक्शनल एंजाइम को कोड करेगा, राइट। सो दे विल हेल्प यू in the lactose utilization process. So if lactose comes inside the cell, then you will think of utilization. If the lactose remains in the media, means if the lactose remains in the petri plate, there is no question of utilizing lactose, right? क्योंकि यहाँ पे परमेज नॉन फंक्शनल है। तो अगर लैक्टोज मीडिया पे रह गया, लैक्टोज सेल के अंदर नहीं आया, इसका मतलब क्या है? लैग ऑपरेंट शुरू होगा ही नहीं। तो अगर लैग ऑपरेंट शुरू नहीं हुआ तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस कैसे होगा? No synthesis of beta galactosidase when Y cells are induced with lactose. This is absolutely correct. The true statement. The true statement, right? It's a correct statement.
बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस होगा ही नहीं. Synthesis of beta galactosides when cells are induced with lactose. This is just opposite statement. This is false, right? This is false. Next, no synthesis of beta galactosides when cells are induced with IPTG. अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे अगर आप IPTG डाल देते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल lactose is an inducer of lactose operon. Lactose, the isomer of lactose is basically allolactose. आप उसमें भी बोल सकते हो, that's not an issue. Similarly, IPTG can also act as inducer of the lag operon. ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? लैक्टोज सेल के अंदर आएगा थ्रू लैक्टोज पार्मिएज एक्शन, बट आईपीटीजी सेल के अंदर आएगा नॉट थ्रू पार्मिएज एक्शन, रेदर बाय डिफ्यूजन, राइट? तो जब आईपीटीजी सेल के अंदर आएगा बाय डिफ्यूजन आ जाएगा. तो इसमें वाई चाहे म्यूटेंट हो, नॉन फंक्शनल हो, कुछ भी हो, उससे कुछ मतलब नहीं है आईपीटीजी का, क्योंकि आईपीटीजी आराम से आ जाएगा सेल के अंदर बाय डिफ्यूजन. तो अगर ये सेल के अंदर आ गया, इट विल स्टार्ट lag operon process, right? इसका मतलब it will induce the synthesis of beta galactosides. तो यहाँ पे क्या लिखा है? No synthesis of beta galactosides when cells are induced with IPTG. This is also wrong. This is also wrong. Understood? क्योंकि synthesis शुरू होना चाहिए, क्योंकि IPTG का जरूरत ही नहीं है लैक्टोज पार्मिएज का, right? Synthesis of beta galactosides when cells are induced with IPTG. जब सेल को आप IPTG से इंड्यूस कर रहे हो, then definitely there will be synthesis of beta galactosides. This is true. This is absolutely true. Correct. The cells induced with IPTG cannot grow in presence of TONPG. It's a compound whose uptake is mediated by lactose permease. अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं, मान लीजिए कि एक मीडिया है, यहाँ पे कुछ सेल्स है, ठीक है? यहाँ पे आप क्या डाल दे हो? यहाँ पे आप डाल दे हो TONPG. It's a compound whose uptake is mediated by lactose permease. अच्छा, तो TONPG अगर आप मीडिया पे डाल दियो, इसको सेल के अंदर आने के लिए परमेज चाहिए, परमेज चाहिए. तो यहाँ पे तो परमेज नॉन फंक्शनल है, राइट? And it will be cleaved by beta galactosides. मतलब this TONPG, this molecule will be, this compound will be cleaved by beta galactosides, which will reduce some, which will release some toxic compound, right? तो यहाँ पे लिखा है कि cells induced with IPTG cannot grow in presence of TONPG. लिखा है इस सेल को अगर आप IPTG से इंड्यूस कर रहे हो, it cannot grow in presence of TONPG. Why? यहाँ पे बोल रहे कि TONPG एक ऐसा कंपाउंड है जिसको जब हाइड्रोलाइज कर देगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो जब हाइड्रोलाइज कर देगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देन क्या होगा? इट विल रिलीज सम टॉक्सिक कंपाउंड व्हिच विल नॉट फेवर सेलुलर ग्रोथ, ऑफ कोर्स, राइट? अच्छा, एक बात बताओ, TONPG जब सेल का अंदर आएगा तभी ये प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? कि हाँ TONPG हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इट विल रिलीज सम टॉक्सिक प्रोडक्ट. अगर TONPG सेल के अंदर नहीं है, तो अगर TONPG बस मीडिया में रहेगा, सेल के अंदर नहीं है, तो इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा सेल का ऊपर, राइट? सेम सिचुएशन यहाँ पे, TONPG खतरनाक है according to this statement E, but the thing is to show some toxic activity or whatever it is, it has to come inside the cell. and यहाँ पे बोला है कि TONPG सेल के अंदर आने के लिए पार्मिएज एक्शन का जरूरत है, इसको पार्मिएज एक्शन चाहिए. तो पार्मिएज जहाँ पे खुद नॉन फंक्शनल है, तो TONPG तो सेल के अंदर नहीं आएगा, ये तो मीडिया में रह जाएगा. तो अगर मीडिया में रहेगा तो सेल का क्या असर होगा उसका ऊपर? कुछ असर नहीं होगा, राइट? तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? So cells induced with IPTG can grow in presence of TONPG. Of course it should grow. यहाँ पे लिखा है it cannot grow. See, यहाँ पे लिखा है it cannot grow. यहाँ पे लिखा है it can grow. Of course it can grow. ठीक है? क्योंकि why it will grow? क्योंकि TONPG तो सेल के अंदर आएगा ही नहीं. इस सेल के अंदर आएगा तभी ना जाके इसका कुछ प्रोडक्ट रिलीज होगा जो कि टॉक्सिक है. तो अगर सेल के अंदर नहीं आया तो वो जो उसका जो टॉक्सिक नेचर है, टॉक्सिक एक्टिविटी है, it will have no effect on cell. Isn't it? So that's why it will definitely grow in presence of TONPG, right? So this is true. So अगर यहाँ पे देखा जाए कि which combinations of the above statement is correct, तो मैं तो देख रहा हूँ ऑप्शन ए करेक्ट है, डी भी करेक्ट है एंड एफ भी करेक्ट है. ADF, या ADF ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. लेट्स सी. या ऑप्शन ए ADF विल बी योर करेक्ट आंसर. समझ में आया? ओके, देखो पूरा कंसेप्चुअल है ये जो टोटल जो क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन है कंसेप्चुअल. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. DNA methylation plays an important role in transcription regulation.
invertebrates. Okay, there is an inverse correlation between the level of DNA methylation in the vicinity of a gene and its transcription rate, whereas there is a direct correlation between the histone acetylation and increased transcription. तो यहाँ पे क्या लिखा है? Methylation has an inverse correlation between the there is an inverse correlation between the level of DNA methylation in the vicinity of a gene and its transcription. So let me write methylation inverse correlation with transcription, right? Methylation transcription के साथ inverse correlation है. Okay. Next, histone acetylation has increased. It will increase transcription. So acetylation ट्रांसक्रिप्शन के साथ इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है. ठीक है, अब देखो, बीटा थैलासेमिया is a common genetic impairment of the hemoglobin beta chain synthesis in humans. If these patients can synthesize hemoglobin F instead of hemoglobin chain in its place, they would be notably benefited. Okay, fine. यहाँ पे बोल रहे कि जो बीटा थैलासेमिया होता है उसमें पेशेंट का अगर hemoglobin F, if the patients can synthesize hemoglobin F instead of simply hemoglobin chain, then the patients will be notably benefited. Okay, fine. इसका मतलब क्या है? इसका एक्सप्रेशन का जरूरत है, हीमोग्लोबिन एफ का एक्सप्रेशन का जरूरत है. एक्सप्रेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन का जरूरत है, राइट? तो अगर हीमोग्लोबिन एफ का ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन होगा सो पेशेंट विल बी मोर, दे विल बी गेटिंग मोर बेनिफिट, राइट? ओके, तो लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5-azacytidine टू थैलासेमिया पेशेंट्स इंक्रीज हीमोग्लोबिन एफ लेवल इन एरिथ्रोसाइट. यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5-azacytidine एक मॉलिक्यूल है जिसका प्रेजेंस में हीमोग्लोबिन एफ लेवल का सिंथेसिस ज्यादा होगा, राइट? इसका मतलब क्या? दैट विल मींस 5-azacytidine विल डेफिनेटली ट्रिगर द एक्सप्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एफ, राइट? वाया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ कोर्स. नाउ दस बेनिफिट द पेशेंट, फाइन. नाउ तो लिखा है, नाउ यह लिखा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 5-azacytidine इज नॉट करेक्ट. व्हिच वन इज नॉट करेक्ट? ओके, चलिए देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. Cells exposed to 5-azacytidine incorporate it into DNA in place of cytidine. Okay, सेल जिसको आप एक्सपोज किया 5-azacytidine पे, 5-azacytidine के साथ जिसको एक्सपोज किया तो कहाँ इनकॉर्पोरेट होगा? डेफिनेटली वही पे इनकॉर्पोरेट होगा, इन प्लेस ऑफ cytidine, राइट? सो दिस इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट. 5-azacytidine डिक्रीजेस डीएनए मिथाइलेशन. अब देखो, मिथाइलेशन के साथ ट्रांसक्रिप्शन का क्या रिलेशन है? इनवर्स. तो अगर आप मिथाइलेशन को डिक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होगा, right? So 5-azacytidine decreases DNA methylation. This is also true, correct. 5-azacytidine promotes histone acetylation. Acetylation के साथ ट्रांसक्रिप्शन का क्या रिलेशन है? दोनों देखो एक साथ है, मतलब दोनों डायरेक्ट कोरिलेशन, राइट? सो अगर आप एसिटाइलेशन को ज्यादा कर रहे हो तो ट्रांसक्रिप्शन भी ज्यादा होगा. It will promote histone acetylation. This is also correct. 5-azacytidine does not promote gene expression. How can it be this? बहुत सिंपल है. 5-azacytidine लिखा है कि it will not promote gene expression. It will promote gene expression via lesser methylation or more acetylation. Understood? Yeah. So last option जो था that will be your correct answer, option D. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3. A synthetically prepared mRNA contains a repetitive AU sequence. AU को आप रिपीट किए हो, फाइन. द mRNA was incubated with mammalian cell extract which contains ribosomes, tRNAs and all the other factors required for protein synthesis. Fine. Assuming no initiation codon is required for protein synthesis. मान लीजिए प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन कोडन का जरूरत ही नहीं है. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप कंसीडर करो. Which of the following peptides will most likely be synthesized? In this case, which of the following will be most likely to be synthesized? अच्छा, AU को अगर आप ऐसे रिपीट कर रहे हो, ऐसे रिपीट किया मैंने, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कितना कोडन जनरेट हो रहे हैं, देखो AUA दोनों सेम है. देन UAU अगेन यहाँ पे
AU के बाद अगर दूसरा फिर AU मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये भी आएगा UAU, राइट, AU ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिव टू डिफरेंट अमीनो एसिड, राइट? A single peptide composed of the same amino acid, no, sorry, a single peptide with alternating sequence of the two amino acids, yes, a single peptide with an alternating sequence of the three amino acids, no, sorry, three different peptides, each sequence composed of a single amino acid, no, sorry. So जो B वाला ऑप्शन है that will be your correct answer, right? Yeah, B will be correct क्योंकि आपको दो अमीनो एसिड मिलेगा क्योंकि दो डिफरेंट कोडोन आ रहे हैं, right? That too in alternative form. Next, question number 4. In semi-conservative mode of DNA replication, two parental strands unwind and are used for synthesis of a new strands, following the rule of complementary base pairing. Fine, इसको आपको पता है. Synthesis of complementary strands require that the DNA synthesis proceeds in opposite direction, while the double-stranded helix is progressively unwinding and replicating in only one direction. One of the DNA strands is continuously synthesized in the same direction as the advancing replication fork and is called leading strand, whereas the other strand is synthesized discontinuously in segments and is referred to as lagging strand, right? Now the question is, these short fragments made discontinuously are labeled as Okazaki fragments. जो छोटा छोटा फ्रैगमेंट होता है उसको Okazaki fragment बोलते हैं. Fine. These Okazaki fragments need to be matured into continuous DNA strand by which one of the following combination? ये जो छोटा छोटा Okazaki fragment है, who will synthesize it? I mean, who will lengthen it? Who will extend it further? DNA pol 1, राइट? तो मान लीजिए एक Okazaki फ्रैगमेंट है, एक Okazaki फ्रैगमेंट है, एक Okazaki फ्रैगमेंट है, राइट? तो इसको एक्सटेंड करना है पहले, तो एक्सटेंड कर दो, तो एक्सटेंड कर दो. बट ये जो फाइनल है, तो एक्सटेंशन के लिए आपको पॉल 1 चाहिए, एक्सटेंशन के लिए आपको पॉल 1 चाहिए, और लाइगेशन के लिए आपको क्या चाहिए? लाइगेशन के लिए आपको लाइगेज चाहिए, लाइगेज चाहिए, लाइगेज चाहिए. तो आपको चाहिए पॉल 1 एंड लाइगेज. देखो, डीएनए पॉल 3 एंड डीएनए लाइगेज, नो, नॉट पॉल 3. डीएनए पॉल 1 एंड डीएनए लाइगेज, यस. डीएनए पॉल 2 एंड डीएनए लाइगेज, नो. डीएनए गाइरेज एंड डीएनए लाइगेज, नो. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट. या, बी विल बी योर करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. In lag operon, the lag operon in E. coli is controlled by both the lag repressor and the catabolite activator protein, which is CAP. In an in vivo experiment with lag operon, the following observations are made. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिखा है. साइक्लिक एमपी लेवल्स आर हाई. अच्छा, साइक्लिक एमपी लेवल्स आर हाई, इसका मतलब आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? अगर साइक्लिक एमपी लेवल पे कम हो रहा है, साइक्लिक एमपी लेवल अगर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज विल बी लेस. Glucose should be less. Repressor is bound with the allolactose. That means lactose is present. Repressor is bound by the allolactose. मतलब lactose is present, right? Lactose is present. That's why it can bind to the repressor. CAP is interacting with the RNA polymerase. इसका मतलब आपका cyclic MP भी है. Cyclic MP तो है, यहाँ पे लिखा है cyclic MP high, right? तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे. Which one of the following conclusion is most appropriate based on the above observation? Glucose and lactose are present. No, glucose level should be very less. Glucose is present and lactose is absent. No, sorry, it should be just opposite. Both are absent. No, glucose is absent and lactose is present. Yes. देखो, ग्लूकोज अगर एब्सेंट हो गया तो साइक्लिक एमपी लेवल्स ऑटोमेटिक बहुत हाई हो जाएगा, एंड लैक्टोज अगर प्रेजेंट हुआ तो डेफिनेटली इट विल गो एंड बाइंड टू द repressor protein, right? Because lactose is an inducer. Okay. So as I told, last option will be your correct answer. Next question number 6. अब देखो, HeLa cell extract was used to study transcription of a gene X having 6 introns. Okay. HeLa cell extract was used to study transcription of a gene X having 6 introns. Okay, fine. RNA pol 2 complex containing all associated proteins was isolated from the actively transcribing system and subjected to proteome analysis. Okay, fine. Results showed the presence of both splicing as well as capping enzymes in the complex. All right.
तो आप एक ऑनगोइंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टडी कर रहे हो, जहां पे रिजल्ट आपको क्या शो कर रहे हैं, रिजल्ट शो द प्रेजेंस ऑफ both splicing and capping enzymes, मतलब the enzymes which are required during splicing as well as capping. Fine. When transcription elongation was inhibited, when the transcription elongation was inhibited by flavopiridol polymerase complex, by flavopiridol polymerase complex contain only capping enzymes. अब देखो, आप फ्लैवोपिरिडोल देके इलोंगेशन को इनहिबिट किया, जब इलोंगेशन इनहिबिट हुआ तो आपको क्या दिख रहा था, आपको सिर्फ दिखा कि कैपिंग एंजाइम, द प्रेजेंस ऑफ कैपिंग एंजाइम. When phosphorylation of the CTT domain of Pol2 was inhibited by a kinase inhibitor, the complex contained neither splicing nor capping enzymes. अच्छा, यहाँ पे दो स्टेप है, एक तो है इलोंगेशन, एक है इलोंगेशन, दूसरा है CTT डोमेन, Pol2 का CTT डोमेन, उसका फॉस्फोरिलेशन. अच्छा, यहाँ पे लिखा है जब ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन वाज इनहिबिटेड, जब इसको इनहिबिट किया तब आपको क्या देखा, सिर्फ कैपिंग एंजाइम देखा, सिर्फ आपको कैपिंग एंजाइम देखा. जब फॉस्फोरिलेशन ऑफ सीटीटी डोमेन को इनहिबिट किया, जब इसको इनहिबिट किया बाय अ काइनेज इनहिबिटर, द कॉम्प्लेक्स कंटेंट neither splicing nor capping, nothing, you could not see anything, nothing you could see. Now from these results following conclusions were made. आप यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंक्लूजन, करेक्ट सेट ऑफ कंक्लूजन. ओके, ठीक है, चलो देखते हैं, शुरू करते हैं. लिखा कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन एक्स इज कपल टू एमआरएनए कैपिंग. ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन एक्स इज कपल टू एमआरएनए कैपिंग. अब देखो, आपका एलोंगेशन चल रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, अब आप इलोंगेशन को बंद कर दिया. अब जैसे इलोंगेशन को बंद कर दिया, आपको सिर्फ कैपिंग देखा, कैपिंग जो एंजाइम है उसका प्रेजेंस देखा. इसका मतलब क्या, जब तक इलोंगेशन चल रहा था, जब तक इलोंगेशन चल रहा था तब तक कैपिंग एंजाइम था, कैपिंग एंजाइम का जरूरत था. क्यों, क्योंकि कैपिंग होना था. जैसे आप इलोंगेशन बंद कर दिया, आपको सिर्फ कैपिंग दिख रहा था. इसका मतलब क्या है, जब तक आप इलोंगेशन किए थे, by that time capping enzyme was already formed, right? So यहाँ पे लिखा है कि transcription of a gene is the transcription of gene X is coupled to mRNA capping, which is absolutely true, absolutely true. क्योंकि जैसे आप इनहिबिट किया, तब जब आप इनहिबिट किया तब तक आपको सिर्फ कैपिंग दिख रहा था. इसका मतलब क्या है, जब तक आप नहीं इनहिबिट कर रहे थे, कैपिंग तब तक था, ऑलरेडी फॉर्म हो गया था, राइट? इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन जब ऑनगोइंग था इलोंगेशन का टाइम पे, that process was coupled to mRNA capping. This is true. This is absolutely true. Transcription elongation is coupled to splicing. Transcription elongation is coupled to splicing. अच्छा, यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन पे लिखा है कि जब एक एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आप स्टडी कर रहे थे, द रिजल्ट शोड द प्रेजेंस ऑफ बोथ स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग. रिजल्ट शोड हाउ, बाय प्रोटियोम एनालिसिस. By proteome analysis, you have already seen that in an actively transcribing system, it has shown the presence of both splicing and capping. So यहाँ पे लिखा है कि transcription elongation is coupled to splicing. This is also true. During transcription, splicing also occurs during transcription only. Phosphorylation of CTD is required for the recruitment of capping and splicing enzyme. Now देखो, यहाँ पे लिखा है कि phosphorylation of CTD is needed, is required for both capping and splicing. यहाँ पे क्या किए आप, CTD जो डोमेन है, जो एक्चुअली फॉस्फोरिलेट होता है Pol2 का, RNA Pol2 का CTD, इसको आप इनहिबिट किया. जब इसको इनहिबिट किया, अब आपको कुछ नहीं दिखा. इसका मतलब क्या है, फॉस्फोरिलेशन ऑफ CTD डोमेन ऑफ CTD डोमेन ऑफ RNA polymerase 2 इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, इज एक्चुअली नीडेड फॉर बोथ स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग. इसलिए जब इसको आप इनहिबिट कर दिया, आपको कुछ नहीं दिखा. अंडरस्टूड? जब इसको इनहिबिट कर दिया, आपको कुछ दिखा ही नहीं. इसका मतलब है phosphorylation of CTD domain of RNA polymerase 2 is actually needed for both the process, both splicing as well as your capping, right? This is also true. Both capping and splicing of mRNA occurs simultaneously. यहाँ पे लिखा है both capping and splicing of mRNA occurs simultaneously. Is it true? अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है जब आप इलोंगेशन चल रहा था, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, कुछ एक स्टेप पे आके आप इलोंगेशन को बंद कर दिया, अचानक बंद कर दिया.
ठीक है, कुछ इलोंगेशन हुआ, मतलब समथिंग हैज हैपेंड, समथिंग हैज लेंथेंड द एमआरएनए, द पॉलीमर हैज फॉर्म्ड। आपको ये चीज पता चल गया कि ट्रांसक्रिप्शन का टाइम पे कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग दोनों होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो बोल्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि जब आप ऑनगोइंग एक्टिवली ट्रांसक्रिप्टिंग सिस्टम को आप स्टडी किए, इट शोड द प्रेजेंस ऑफ बोथ स्प्लाइसिंग एज वेल एज कैपिंग एंजाइम्स। मतलब जब कोई एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आप स्टडी किए हो, देन यू हैव सीन द प्रेजेंस ऑफ बोथ द एंजाइम्स। इसका मतलब दोनों प्रोसेस, दोनों इवेंट होता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, बट द क्वेश्चन इज डज इट हैपन साइमल्टेनियसली? डज इट हैपन साइमल्टेनियसली? अगर ये साइमल्टेनियसली होता, अगर दोनों स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग दोनों अगर साइमल्टेनियसली होता, देन जब आप इलोंगेशन को इनहिबिट किए थे, यहाँ पे दोनों आपको देखने को मिलता। यहाँ पे आपको जैसे कैपिंग दिख रहा था, कैपिंग वाला एंजाइम दिख रहा था, यहाँ पे आपको स्प्लाइसिंग भी दिखना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो जब इलोंगेशन को आप इनहिबिट किए हो तो डेफिनेटली दोनों को दिखना चाहिए। या तो दोनों को नहीं दिखना चाहिए या तो दोनों को देखना चाहिए। अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? अगर आप समझ रहे हो कि दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो इनहिबिशन का अगर असर हुआ तो आइदर इट विल हैव फुल इंपैक्ट ऑन बोथ और इट विल हैव नो इंपैक्ट। तो दोनों यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे सिर्फ कैपिंग दिखा। इसका मतलब क्या है? कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग जो है दे नेवर गो साइमल्टेनियसली। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे लिखा है कि बोथ कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए ऑकर साइमल्टेनियसली, व्हिच इज रॉन्ग। तो यहाँ पे ट्रू कितना है? ए बी सी तीनों ट्रू है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सेट ऑफ कंक्लूजन। ओके, ए बी सी आर करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट, others these are yes, A B C will be correct. Next question number 7. In a temperature sensitive mutant bacteria at a non-permissive temperature, there are huge accumulation of Okazaki fragment. The bacteria are mutant for, wow, this is an excellent question. This is an excellent question. अब देखो, मान लीजिए ये सब ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर दिस विल बी एक्यूमुलेटेड बिकॉज ऑफ डीएनए पॉल 1। Majority of you will be thinking it is because of DNA pol 1, I mean mutation in DNA pol 1, but which is absolutely wrong. अब देखो, मान लीजिए ये जो रेड वाला पार्ट है, दिस इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। अब मान लो डीएनए पॉल 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए पॉल 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटेंड कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। अब यहाँ पे अगर नहीं जोड़ोगे, यहाँ पे अगर लाइगेट नहीं करोगे, देन व्हाट विल हैपन? It will remain a big fragment only. ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो कि स्मॉलर था, डीएनए पॉल 1 एक्सटेंड किया, it will be a bigger fragment, right? Only difference will be DNA pol 1 has worked, that means the fragment will be more because fragment will be extended, but still it will remain as fragment. Would you follow my point? Still it will remain as fragment, bigger fragment. अगर डीएनए पॉल 1 उसको एक्सटेंड नहीं करता तो स्मॉलर फ्रैगमेंट होता, इसको एक्सटेंड किया, बिगर फ्रैगमेंट। तो इसको अगर कंटिन्यूअस होना है, इसको अगर कंटिन्यूअस होना है तो यहां पे लाइगेशन होगा, डीएनए लाइगेज चाहिए आपको। अब समझ में आया? डीएनए लाइगेज जब तक ना इसको सील कर रहे हैं, इट विल रिमेन एज फ्रैगमेंट ओनली। So if the Okazaki fragments are accumulated, that means the ends are not sealed. So the blame will be on DNA ligase, not on DNA pol 1. क्योंकि अगर DNA pol 1 इसको चाहे कितना भी एक्सटेंड कर लो, फाइनल सीलिंग के लिए उसको लाइगेज को चाहिए ही चाहिए। अंडरस्टूड? तब यहाँ पर लिखा है कि देयर इज ए ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट एक्यूमुलेटेड है, मतलब क्या है? जो एंड है वो सील नहीं हुआ, एंड सील नहीं हुआ तो ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? डीएनए लाइगेज के ऊपर जाएगा सीधा। अंडरस्टूड? Okay, this is a very interesting question. Your answer will be DNA ligase. Okay, yeah. Next, question number 8. DNA polymerase processivity. अच्छा, DNA polymerase processivity क्या है? देखो, मान लीजिए ये है DNA पॉल, ये है बीटा क्लैंप, है बीटा क्लैंप। तो जब सिंथेसिस होगा, डीएनए चेंज जब सिंथेसिस होगा,
जब सिंथेसिस शुरू होगा, तब क्या होगा, ये बीटा क्लैम्प, ये जो डीएनए पॉल है, राइट, डीएनए पॉल 3 इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। जब तक एसोसिएटेड रहेगा सिंथेसिस चलेगा, जैसे डिसोसिएटेड हो जाएगा सिंथेसिस बंद हो जाएगा, फिर रीएसोसिएट होगा, फिर सिंथेसिस शुरू होगा, फिर डिसोसिएट हो जाएगा, फिर सिंथेसिस बंद हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जब तक बीटा क्लैम्प डीएनए पॉल 3 के साथ एसोसिएटेड रहेगा तब तक वो सिंथेसिस कंटिन्यू होगा, जब ए बाहर आ जाएगा तब सिंथेसिस भी बंद हो जाएगा, राइट। तो प्रोसेसिविटी मतलब क्या है, जब तक, मतलब बीटा क्लैम्प डिसोसिएट होने से पहले, जितना सिंथेसिस होता है that will be considered as the processivity, right? So DNA polymerase processivity is a measure of the number of nucleotides joined before the polymerase dissociates, from beta clamping. Okay, yes, this is actually true. So DNA polymerase processivity is determined by the ability of the enzyme to also have nuclease activity. No, sorry, is a measure of the thermal stability of the enzyme. No, sorry, is a measure of the rate of elongation of newly synthesized strands. No, this is wrong. Okay, so statement A will be your correct answer. Okay. Next, question number 9. Which of the following enzymes does not require a primer? Which of the following enzymes does not require a primer? DNA pol, of course it requires. DNA pol requires, I mean both it is RNA dependent or DNA dependent. RNA polymerase will not require any primer. Have you studied the requirement of primer in transcription? No, right? Yeah, so this will not. This of course it needs. So RNA polymerase will be your answer, that which does not require any primer. Okay. Topoisomerase 1 does not require ATP, even though it does cleavage and ligation of DNA. Okay, fine. This is because topoisomerase 1 does not require ATP, even though it does cleavage and ligation of DNA. मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जनरली क्या होता है, क्लीवेज लाइगेशन ये सब के लिए एटीपी का जरूरत है क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि इट डज नॉट रिक्वायर एटीपी, इसको एटीपी का जरूरत नहीं है, स्टिल इट हेल्प्स इन क्लीवेज एज वेल एज लाइगेशन। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज इट यूजेस जीटीपी एज एनर्जी? नो, इट कंजर्व्स द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग क्लीवेज बाय बाइंडिंग विथ ट्रिप्टोफैन ऑफ एन एंजाइम एंड रीयूज्ड tryptophan. No, sorry, this reaction does not require energy at all. No, sorry, it conserves the energy liberated during cleavage by binding with tyrosine of an enzyme and reused it. Yes, it binds to tyrosine, not tryptophan. Okay, option D will be your correct answer. Yeah, option D will be your correct answer. It will bind to tyrosine. Next, if a completely radioactive double-stranded DNA molecule undergoes 2 rounds of replication in a non-radioactive medium, what will be the radioactivity status of the 4 resulting molecules? Okay, fine. चलो यहाँ पे मैं कुछ कलर कर रहा हूँ, मान लीजिए ये है रेडियोएक्टिव, है रेडियोएक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड होगा, या फिर यहाँ से जब फर्स्ट राउंड होगा ये ऐसे आएगा, यहाँ पे ये है, ये जो रेड कलर है नॉन रेडियोएक्टिव, ये है नॉन रेडियोएक्टिव। ओके, फाइन। तो ये है फर्स्ट राउंड, अब यहाँ पे होगा सेकंड राउंड। जब सेकंड राउंड होगा तो यहाँ पे ये अलग हो जाएगा, देखो ये अलग हो गया, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, देन आपका ऐसे होगा। ओके, एंड ओके, या तो यहाँ पे आएगा येलो कलर, देखो यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, एक जब आप इसको डीनेचर कर दो, पहले एक साइड में येलो आएगा, एक साइड दूसरा साइड में आएगा रेड, राइट, दूसरे साइड में रेड हो गया। तो आप यहाँ पे नया हुआ, यहाँ पे नया हुआ, राइट, हाँ कि नहीं? तो अच्छा, इसको सिर्फ सेकंड राउंड करना था। ओके, तो ये बीच में ये दो नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखो अल्टीमेटली कितना मॉलिक्यूल हो रहा है, कि अगर मैं बीच का, अगर इसको जस्ट ए मिनट, या अब देखो
अब देखो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल आ रहा है, यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल हो रहा है, टोटल 4 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे टोटल 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे टोटल 4 है। तो ये जो 4 हुआ, 1 2 3 4, ये जो 4 हुआ, इनमें से रेड कलर है नॉन रेडियो एक्टिव, येलो कलर है रेडियो एक्टिव, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि इसको रेडियो एक्टिव से नॉन रेडियो एक्टिव में 2 राउंड किया। ये है फर्स्ट राउंड, ये है सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्स नो रेडियो एक्टिविटी। हाफ में मतलब ये जो 4 है, 4 का हाफ है, मतलब सेकेंड एंड फोर्थ वन विच आर टोटली नॉन रेडियो एक्टिव, राइट। देखो ये टोटल 4 मॉलिक्यूल आपको मिला, टोटल 4 स्ट्रैंड, 4 में से 2 तो टोटल नॉन रेडियो एक्टिव, राइट। So half of the number of molecules contains no radioactivity. Yes, this is true. All 4 molecules contain radioactivity. No, sorry. All 4 does not. Wrong. 3 out of 4 molecules contain radioactivity. This is also wrong. Radioactivity is lost from all 4 molecules. No. Radioactivity will be retained. Understood? So this is the way how it can be done. Okay. So simple thing. Yeah. So half of the molecules contains no radioactivity. Next, question number 12. देखो, which subunit of E. coli RNA polymerase is responsible for gene selection? Which subunit of E. coli RNA polymerase is responsible for gene selection? बहुत सिंपल है, कौन सा है? सिग्मा सबयूनिट, राइट। सिग्मा सबयूनिट पता है, सिग्मा सबयूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर promoter recognition. Okay, promoter recognition. So your answer will be sigma. Next, which of the following elements is not a characteristic of factor independent terminators in E. coli? Which of the following elements is not a character of factor independent terminators in E. coli? Okay, fine. A C-rich sequence. No, sorry, it will not be C-rich sequence. A GC-rich sequence I could see. Yes, GC can be, but not C. An RNA sequence that can form a stem loop. An RNA sequence that can form a stem loop. Yes, it can definitely. A run of single-stranded U residues. Yes, of course, it has to be. So, a C-rich sequence will not be the correct answer. Okay? Because यहाँ पे G-rich sequence होगा, not C. Yeah, this is the one I was telling. Next, question number 14. A covalently closed circular DNA containing a single promoter is mixed with RNA polymerase that open complexes from where one turn of DNA is unwound. One turn of DNA is unwound. अगर DNA का one turn आप unwound कर दिया, then what will happen? आपका जो रीडिंग नंबर है, रीडिंग नंबर will be increased. Reading number will be increased. Other question is, which of the following statements will be true? Please note that L equals to linking number, T equals to twisting number, W equals to reading number. अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, L equals to T plus W. L के क्या मतलब है? लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग नंबर प्लस रीडिंग नंबर, राइट। ओके फाइन। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, लिंकिंग नंबर तभी चेंज होगा जब आप डीएनए को ब्रेक करोगे। मतलब इफ यू ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए, देन यू कैन एक्सपेक्ट चेंजेस इन द लिंकिंग नंबर, otherwise there will be no changes. If you simply change their conformation, okay, without breaking their phosphodiester bond, there will be no change in linking number. There will be only change around twisting and reading. Okay, so they will cancel out each other. Why? Because their linking number will remain same. Understood? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका जो W है, जो रीडिंग नंबर है, दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय वन टर्न। तो ये अगर इंक्रीज हो जाएगा, ट्विस्टिंग हैज टू बी डिक्रीज्ड बाय 1. If it is increased by 1, it has to be decreased by 1 so that your linking number will remain same. और इसको सेम रखना ही है, क्यों? क्योंकि लिंकिंग नंबर चेंज करने के लिए आपको डीएनए का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है. So if you don't break it, there will be no change in the linking number. Understood? Okay. L will decrease because T will decrease by 1. Sorry. L will increase. There will be no increase or no decrease around L. L will stay the same because T and W will not change. Sorry. L will stay the same because an increase in W will cancel out the decrease in T. Absolutely true. Absolutely true. Okay, fine. Yeah.
lust. This will be the right answer. Next, question number 15. देखो. During RNA polymerase 2 transcriptional initiation, phosphorylation of the following factor is essential to commence the transcription, which I already spoke a lot in my theory classes, and absolutely true. It requires the phosphorylation of polymerase 2 CTD domain, not of TF2D, not of H, not of E. Okay, so it requires the phosphorylation of polymerase 2 CTD domain. Okay, so please remember it. Next, question number 16. In bacteria, N-formyl methionine is the first amino acid to be incorporated into a polypeptide chain. Accordingly, one would think that all the bacterial proteins have a formyl group at their amino terminus, and the first amino acid should be methionine. But this is not the case, right? Yes. However, this is not the case because of the following possible reasons. So there are some possibilities mentioned here. Choose the combinations of the correct answers from the following. Okay. D-formylase removes the formyl group only during or after the synthesis of the polypeptide. Yes, correct. Aminopeptidase removes only the amino terminal methionine. No, sorry. Aminopeptidase removes the amino terminal methionine as well as one or two additional amino acids. Yes, this is true. This is true. D-formylase removes the formyl group as well as amino terminal methionine. No, it will not. D-formylase, remember, it will remove the formyl group only during or after the synthesis of polypeptides. Okay, so A and C will be the correct answer. A and C will be the correct answer. Okay, let us see. Yeah, A and C will be the correct answer. Next, question number 17. Pre-mRNAs are rapidly bound by snRNPs, which carry out dual steps of splicing that removes the intron and joins the upstream and downstream exons. Fine. The following statements describe some of the facts related to this event. Okay, ठीक है, चलो देखते हैं. यहाँ पे लिखा है कि which one of the following combination is correct. Okay. Almost all introns begin with GU and end with AG sequences, and hence all the GU or AG sequences are spliced out of RNA. Absolutely not. Not all the introns will begin at GU and end with AG. Sorry, this is not true. U2 RNA recognizes important sequences at the 3' acceptor end of the intron. Yes, this is true. The spliceosomes uses ATP to carry out accurate removal of intron. Yes, this is also true. An unusual linkage with 2' OH group of guanosine within the intron form a lariat structure. Oh, sorry. When you're talking about lariat structures, it is not 2' OH of guanosine, it is adenosine, right? It is adenosine, not G. It is E. It is A, not G. So this is wrong. So which of the following combination is correct? Option B and C should be correct. Where is B and C? Yeah, B and C should be correct. Understood? Yeah, B, देखो, B and C should be correct. अब देखो, question number 18. In order to study the role of telomeres in DNA replication, you will study the role of telomeres in DNA replication. Genetically engineered mice were prepared. Fine. Where the gene for telomerase RNA was knocked out. When cells from these knocked out mice were taken and cultured in vitro, they proliferated even after 100 cell divisions, which is quite unlikely in the case of human cells. Now the question is, which of the following is the correct reason? Which of the following is the correct reason? Human and mice are fundamentally different. Human and mice are fundamentally different with respect to their requirements for telomerase enzymes in the context of DNA replication. Human and mice are fundamentally different with respect to the requirements for telomerase enzyme. No, this is not true. देखो, human and mice के बीच बहुत सारे difference है. But when it comes to the requirement of telomerase enzyme, there is no difference. Okay, so this is wrong. In vitro, mice DNA becomes circular due to end-to-end chromosomes fusion and does not require telomerase for DNA end replication. No, this is sorry. How can it be true? Okay, mice have very long stretch of telomerase DNA sequence compared to that of human. Yes, mice have a very long stretch of telomerase DNA sequence compared to that of human. Yes, this is true. In vitro, mice DNA replication does not require the removal of RNA primer.
Wrong. So C will be your correct answer. तो ये जो difference आ रहा था, this difference is basically because of mice have a very long stretch of telomerase DNA sequence as compared to human, right? Yeah. So C will be your correct answer. Next, question number 19. During elongation step of protein synthesis, translocation moves the mRNA and the peptidal tRNA by one codon through the ribosome. Okay. Translocation in E. coli involves GTP and EFG. However, in vitro translocation can take place independent of GTP and EFG. जैसे क्या समझ में आ रहा है? जब आप E. coli की बात कर रहे हैं, मतलब in vivo, it involves GTP and EFG both. It involves GTP plus EFG दोनों. However, in vitro translocation, जब आप इन विट्रो का बात कर रहे हैं, the translocation can take place independent of GTP and no GTP, no EFG. Okay. Based on these observations, the following hypothesis can be made. देखो क्या है, कुछ hypothesis दिया है. Which one of the following combination is correct? Okay, चलो. The molecular mechanism of translocation in vitro is completely different from that in vivo. आपको लगता है कि दोनों प्रोसेस टोटली डिफरेंट है? यहाँ पे देखो क्या वर्ड मेंशन किया है, कंप्लीटली डिफरेंट. हाउ कैन इट बी कंप्लीटली डिफरेंट? इन विवो से इन विट्रो कैसे कंप्लीटली डिफरेंट होगा? दैट टू ओनली इट इज डिफरेंट ओनली एट द लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ जीटीपी एंड ईएफजी. इन विवो का केस में दोनों का जरूरत है, इन विट्रो का केस में दोनों का जरूरत नहीं है. तो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन नॉट से बोथ द प्रोसेसेस आर टोटली डिफरेंट, राइट? दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Translocation activity is independent of GTP hydrolysis. Translocation process does not require GTP hydrolysis. Is it a true statement? No. It does not require GTP hydrolysis in case of in vitro. You should write. This is specifically for in vitro. I mean, this statement is applicable to in vitro, which is not correct here. Translocation activity is completely dependent on GTP and EFG. Again, this is, you should mention in vivo. You should mention only in vivo, क्योंकि in vitro में तो इसका जरूरत नहीं है. So it seems you made a generalized statement, but actually these statements applicable to either in vitro or in vivo. Understood? Okay. Translocation activity is inherent in ribosome. However, the rate of translocation in vivo is enhanced significantly in the presence of GTP and EFG. Translocation activity जो होता है ribosome में, that it is inherent, of course. However, the rate will be more in vivo. Why? Because the GTP and EFG are present. Okay, that is a true statement. But you cannot say it does not require. You cannot say it requires, and you cannot say both in vitro and in vitro and in vivo processes are entirely different. It is simply different at the level of requirement of EFG and GTP hydrolysis. Nothing more than that, right? So which statement is correct? I could say only option 4 is correct. Yeah, only option 4 is correct. Let us see. Yeah, only option 4 is correct. Next, a non-enzymatic viral protein X was found to be inducing a cellular gene promoter activity. Okay. Although no in vitro DNA binding activity could be identified with X protein, it was found to be co-recruited on the cellular promoter along with the cellular transcription factors in vivo. Which one of the following statements seems to be the best interpretation of the above findings? Okay, चलो X के बारे में बताते हैं. यहाँ पे लिखा है X is a DNA binding protein. Sorry, अगर DNA binding protein होता, अगर DNA ये मान लीजिए कि DNA है, X यहाँ पे बाइंड नहीं किया, यहाँ पे तो लिखा है देखो, no in vitro DNA binding activity could be identified with X protein. इसका मतलब क्या है? X protein does not bind to DNA. तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है कि X is a DNA binding protein. How can it be correct? It is wrong. Next, X physically interacts with the transcription factors. X physically interacts with the transcription factors. मान लीजिए कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि DNA के साथ बाइंड किया. X interacts with transcription factor. That can be. Why? Because in this case, X is not interacting with the DNA. It interacts with transcription factor. The transcription factor which actually interacts with DNA.
I'm talking about X. So this can be correct. X modifies the chromatin for transcription activation. No, sorry. Because if it needs to modify the chromatin, it has to bind to the DNA, which is absolutely not true. क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे no in vitro DNA binding activity. इसका मतलब है it will not bind to DNA. X is a chaperone. No. If you don't see any role of this protein X in folding, protein folding, right? Yeah. So statement B will be your correct answer. Right? Yeah. Statement B will be your correct answer. Next, question number 21. देखो, for continuation of protein synthesis in bacteria, ribosomes need to be released from the mRNA as well as to dissociate into subunits. Yeah, अगर protein synthesis को stop करना है तो ribosomal disassembly is बहुत important, क्योंकि ribosomal assembly is the first step of protein synthesis. So similarly, ribosomal disassembly means the dissociation of smaller subunit from the larger subunit is the last step and is the most important step to stop the translation process, right? Okay. Now these processes do not occur spontaneously. They need the following possible conditions. Okay, fine. Which of the following sets is correct? Okay, चलो देखते हैं. RRF and EFG aids in this process. They help in this process. Right? Yes, correct. Both help in this process. And intrinsic activity of the ribosomes and all the unchanged tRNAs are required. Why do you need all the unchanged tRNA? No, this is not correct. IF1 promotes dissociation of the ribosomes. IF3 and IF1 promote dissociation of the ribosomes. Yes, both are actually needed. Both are needed, not only one. Both are needed, right? So, which of the following is correct? Statement A and statement D. A and D will be correct. Yes, A and D will be correct. Okay. Next, question number 22. Underwinding or overwinding of circular double-stranded DNA generates supercoil only when it does not have any of the following. आप DNA को चाहे ज़्यादा सुपरकॉइल बनाओ चाहे कम सुपरकॉइल बनाओ, दोनों ही पॉसिबल है अगर DNA में कोई लीकेज नहीं है, मतलब DNA में कोई नीक नहीं है. अगर नीक आया, नीक मतलब क्या? दिस इज निक. देखो, निक. ओके, दिस इज निक. तो मतलब एब्सेंस ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड. तो जब एंड यहाँ पे सील्ड नहीं है, तो चाहे इसको सुपर कॉइल ज़्यादा बनाओ या तो कम बनाओ, none of this in nick DNA you cannot have no supercoiled, neither positive supercoiled nor negative supercoiled, isn't it? Repeat sequence, no, it has no role here. GC sequence, GC rich, AT rich, no, these are all simply they have given some options. Yeah, nick will be the right answer. Next, gamma phosphate level ATP molecule was used to level a DNA fragment using the nick translation protocol. Okay, gamma phosphate of ATP is radio leveled in a nick translation protocol. Fine, this would result in, अब देखो ATP ऐसे है, अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट. अच्छा, जब एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, क्या होता है ड्यूरिंग योर डीएनए सिंथेसिस, क्या होता है? बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट आर रिलीज्ड. बीटा एंड गामा both are released. Both are released. So once a nucleotide is added, PPI will be released. Understood? Once a nucleotide is added, PPI is released. तो PPI रिलीज का क्या मतलब है? बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट दोनों रिलीज हो गया. एंड यहाँ पे आप एक ATP लिए हो जिसका गामा फॉस्फेट है रेडियो लेवल्ड, जिसका ओनली गामा फॉस्फेट रेडियो लेवल्ड है. ठीक है, तो जिसका ओनली गामा फॉस्फेट रेडियो लेवल्ड है, इसको आप यूज किया यहाँ पे, तो इसका क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी आपको दिखेगा ग्रोइंग डीएनए चेन पे? नहीं, आपको डीएनए का जो ग्रोइंग चेन है वहाँ पे नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि गामा एंड बीटा दोनों तो रिलीज हो जा रहे हैं. हर एक बार न्यूक्लियोटाइड एडिंग हो रहे हैं तो बीटा एंड गामा विल बी रिलीज्ड. एवरी टाइम अ न्यू न्यूक्लियोटाइड इज एडेड, बीटा एंड गामा विल बी रिलीज्ड. I mean beta phosphate and gamma phosphate will be released. So if you use only gamma phosphate, it will never be retained in the DNA chain at all. So which phosphate is actually retained? The phosphate which is part of phosphodiester bond. Which one is that? This is nothing but alpha phosphate. So if you used to see any radioactivity, remember
If you used to see any radioactivity in the growing DNA chain, your all the nucleotides, means all the DNTP, should be radio labeled at alpha phosphate, not beta, not gamma, because both beta gamma will be released. So please keep in mind, I'll repeat my statement again. If you wish to observe any radioactivity on terms of 32p in the growing DNA chain, you have to radio label DNTPs at alpha phosphate, not at beta, nor at gamma. Understood? ओके सो यहाँ पे आप किए हो गामा फॉस्फेट पे, तो यहाँ पे भी लेवलिंग नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, नो लेवलिंग. ओके, नो लेवलिंग विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following statements is not true for eukaryotic DNA replication? Which of the following statement is not true for eukaryotic DNA replication? Okay, fine. Chalo. It has multiple origin. Yes, this is true. It has multiple origins. It is synchronized to phases of cell cycle. Yes, this is also true. It does not involve Okazaki fragment. Oh my God, how can it be? Okazaki fragment is applicable to both prokaryotes as well as eukaryotes, right? It requires licensing of pre-replicative complex. Yes, this is also true. So this is not true. Not true likha hai, right? Not true. So C will be your answer. Not true. Your answer. Next, 25. Which type of replication requires a break in the nucleotide strand to get started? Which type of replication requires a break in the nucleotide strand to get started, right? Acha. Theta replication, rolling circle, linear eukaryotic replication, theta and linear. Not theta, it is actually rolling circle. अच्छा, आप ऐसे देखे हो, ऐसे देखे हो ब्रेक, ठीक है. तो ये जो ब्रेक है, this you will find in rolling circle replication, right? Rolling circle, not in theta, not in any other cases. Yeah, it will be in rolling circle. Next, 26. Variation in which type of repeat sequence commonly arise by replication slippage? एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है. आपको कौन सा टाइप ऑफ वेरिएशन दिखेगा जहाँ पे व्हिच टाइप ऑफ रिपीट सीक्वेंस commonly arise by replication slippage? The answer will be microsatellite. Please remember, this is a memory based questions. Remember it. You have to memorize microsatellite. Okay, yeah, microsatellite. Next, a closed circular DNA molecule is treated with a saturating concentration of an intercalator followed by treatment with a topoisomerase until it is completely relaxed. Now, if the intercalator is now removed by dialysis, the DNA molecule will become what? देखो, अब देखो, यहाँ पे मान लीजिए DNA है, यहाँ पे DNA है, ठीक है. यहाँ पे कुछ इंटरकलेटर है, कुछ इंटरकलेटर आ गया, कुछ इंटरकलेटर यहाँ पे आ गया, कुछ इंटरकलेटर आ गया, ठीक है, आ गया. अब बोल रहे कि इंटरकलेटर को आप रिमूव कर दो बाय डायलिसिस. बाय डायलिसिस इसको रिमूव कर दो. अगर रिमूव कर दिया तो क्या होगा? ये और ज़्यादा सुपर कल्ड हो जाएगा, क्योंकि somehow using intercalator, आप somehow by using intercalator you could able to separate the DNA, you could able to make it relaxed. So when you are trying to relaxing the DNA, at the same time you are removing the molecule, you are removing the agents which helped in DNA relaxing, which helped in relaxing the DNA. So if you remove those agents which actually helped in DNA relaxing, so what will happen to the DNA? It will be more super coiled. It will be mess, total. It will be tangle actually, Positively super coiled. It will be positively super coiled. Yes, it will be more super coiled. It will become negatively super coiled. No, it will remain relaxed. It will never be relaxed. Exactly half of the molecules will become super coiled, positive super coiled, and other half will be negatively super coiled. No, sorry. Whole thing will be mess. Whole thing. It will become more super coiled, positively super coiled. Yes, it will be positively super coiled. Next, question number 28. Which of the following statements about IPTZ and lactose is not correct? Is not correct. Okay, fine. चलो देखते हैं. IPTZ is an analog of lactose. Yes, correct. Both IPTZ and lactose are inducers of the lag operon. Yes, this is also correct. IPTZ is not metabolized while lactose is metabolized by the cell. Absolutely true.
Absolutely true. IPTC cannot be metabolized, but lactose can be metabolized. Okay, fine. Both IPTC and lactose need permease for entry into the cell. No, absolutely not. Lactose का जरूरत है permease का. IPTC goes by diffusion. It simply goes by diffusion. It does not require lactose permease action to go inside the cell. Understood? So this is wrong. This statement is wrong. यहाँ पे लिखा है कि not correct. So last statement will be not correct. Next, question number 29. The common feature of row independent and row dependent termination of transcription is. The common feature of row independent and row dependent termination of transcription is the active signal lies in the direct repeat in the nascent RNA. The active signal lies in the double stranded DNA template. Sorry. The active signal lies in the nascent RNA. Yes. Both require ATP. No. The active signal lies in the direct repeat. No. So your answer will be C. Answer will be C. Understood? Answer will be C. Yeah, answer will be C. Next, question number 30. In a segment of a transcribed gene, the non-template strand of DNA has the following sequence. Okay? This is what? This is a non-template strand. This is non-template. So non-template means what? It is a coding strand. Okay, coding strand means non-template strand. So what will be the corresponding 523 sequence in the RNA produced from this segment of gene? अच्छा, coding sequence क्या है? एक बार देख लेते हैं. AGCT, AGCT, CACTG, CACTG. ये कोडिंग सीक्वेंस. तो यहाँ से जो mRNA बनेगा तो इसका क्या होगा? A G C U C A C U G 5 prime to 3 prime. AGCU AGCU. This will be your answer. क्योंकि ये लिखा है कि ये नॉन टेम्पलेट है, मतलब दिस इज द कोडिंग स्टैंड. अंडरस्टूड? तो बी विल बी योर आंसर. या बी विल बी योर आंसर. हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे. ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी किए. तो एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं थैंक यू बोलने से पहले. ऑफ कोर्स हम लोग पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जितना सारे क्वेश्चन है तो एनालाइज किए, चाहे वो रेप्लिकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसलेशन रिलेटेड हो, चाहे वो ऑपेरॉन रिलेटेड. ठीक है. So I tried my level best to incorporate all the sections which basically covers under molecular biology, and I wish you all the best for the coming exam. Thank you so much.